space to any topological space y is continuous। हमने अपनी इन तीनों टॉपिक्स जो हमने देखे हैं उनमें हमने देखा है कि जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं एनी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स से इनडिस्क्रीट में, तो वो क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस हो जाता है। हमारे पास y क्या है, एक स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी है। और हमने देखा कि अगर हम x के अंदर सबसे फाइनल टोपोलॉजी ले लेते हैं, सबसे बड़ी टोपोलॉजी ले लेते हैं, वो क्या है, डिस्क्रीट स्पेस है या डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो भी हमारा फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। नाउ वी चेक का important relationship based on these kinds of topology by using identity function. Continuity and open sets, we have very important theorem is if x star x be strictly finite topological space, then topological space x with topology tau x dash, then identity function defined from topological space x with topology tau x dash to topological space x with topology tau x is not continuous. We know that in identity function defined from space x to the same space x, I of x is equal to x for all the elements x belongs to topological space x. Now we show that how this identity function is not continuous. As we say, x star x be strictly finite, then x star x dash. So we have tau x dash is subset of tau x. We use the word strictly finite, not equal. इक्वलिटी की प्रॉपर्टी या इक्वलिटी की पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि tau x dash इक्वल हो जाए tau x के। tau x dash is strictly subset of tau x. As we say, x star x is strictly finer than x star dash. So tau x dash is subset of tau x. It means there must exist an element u belongs to tau x such that this open set u of tau x does not belongs to tau x dash. tau x dash subset है tau x का और इक्वलिटी इनमें होल्ड नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि tau x में कोई ऐसा एलिमेंट ज़रूर बिलोंग करता है जो tau x डैश से बिलोंग नहीं करता। हम कहते हैं कि लेट वो एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट u है जो tau x से तो बिलोंग करता है बट इट डज़ नॉट बिलोंग्स टू tau x डैश। नाउ लेट u इज बिलोंग्स टू tau x by the definition of identity function. Inverse image of u is equal to u, but we say that this u is not belongs to tau x dash. So inverse image of u is not open in topological space x with topology tau x dash. अगर हम ये कह रहे हैं कि एक ओपन सेट u हमने ले लिया tau x में से और उसका इन्वर्स इमेज जो है वो बिलोंग नहीं करता tau x डैश से या वो ओपन नहीं है, तो ये तो ऑब्वियस है बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड बिटवीन टू टोपोलॉजिकल स्पेस, दिस आइडेंटिटी फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस फ्रॉम टोपोलॉजिकल स्पेस x विद टोपोलॉजी tau x डैश टू टोपोलॉजिकल स्पेस x विद टोपोलॉजी tau x. Some more examples
to understand the relationship between continuity and open sets. Let us see some examples to understand the role of open collection in continuity of a function. Example number 1. Let X is a 4-point set. ये 4-point space have 4 points A, B, C and D. With topology tau X. Have the elements empty set, singleton set B and the whole space X. And Y also have 4 points 1, 2, 3 and 4. Tau Y have the elements empty set, singleton 2, the set 1, 2, the set 2, 3, 4 and the space Y. Let's define a function from topological space X to Y. F of A is equal to 2, f of B is equal to 4, f of C is equal to 2 and f of D is equal to 3. Under this function, we see that f is not continuous. The reason is because inverse image of open set 1, 2 belongs to tau Y is equal to the set AC. The set AC is not belongs to tau X. So inverse image of the element of tau Y 1, 2 is not open in topological space X. So we say that f is not a continuous function from topological space X to Y under this function f. If we consider the same function as we defined above, function f from X to Y, now we change the name. This function is g from X to Y such that g of A is equal to 2, g of B is equal to 4, g of C is equal to 2 and g of D is equal to 3. The change in its domain topology in tau X. The tau X is equal to element empty set phi, the element B, the element AC, the element ABC and the space X. We change the topology defined on X, name as tau X dash. The element of this tau X dash is empty set, the singleton B, the element AC, the element ABC and the space X. And topology defined on Y is remain same. Then the function g defined from X to Y is continuous. हमने x भी वही ली, y भी वही लिया, फंक्शन भी सेम रहा हमारा. द ओनली चेंज हमने क्या किया कि हमने जो x के ऊपर टोपोलॉजी डिफ़ाइन की थी उसको हमने मज़ीद फाइनर कर दिया, मतलब उसमें हमने कुछ और एलिमेंट्स ऐड किए हैं जो कि tau X में नहीं थे, tau X डैश में वो इंक्लूड हैं. वो एलिमेंट है एलिमेंट AC और एलिमेंट ABC. Under this consideration of topology tau X dash, the function is continuous. हमने ओपन सेट्स को चेंज किया डोमेन स्पेस में, तो हमारा ये जो फंक्शन था वो कॉन्टिन्यूस हो गया. तो इसका मतलब है कि टोपोलॉजिकल स्पेस में जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं उसकी कॉन्टीन्यूटी टोटली डिपेंड करती है कि हमने उसके ऊपर ओपन सेट कैसे डिफाइन किए हैं या उसके ऊपर टोपोलॉजी टा कैसे डिफाइन की है. लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल. द टोपोलॉजिकल स्पेस X is equal to real topology defined on R and the topological space Y is also equal to real topology on R. We define a function from X to Y is a linear function such that f of X is equal to X plus 1. We already discussed that this function is continuous, and also in calculus we know that every linear function is
continuous. But if we consider a change on the topologies defined on x and y, then this linear function not remain continuous. If we change the topologies defined on x and y, then this linear function not remain continuous. Let the topology defined on x is usual topology and the topology defined on y is lower limit topology. And our claim is this function is not continuous under these topologies. Let us consider a open set 0 1, which is open on 0 and closed on, which is closed on 0 and open on 2, because this is a lower limit topology. Half open half closed interval 0 1, which is belongs to topological space Y. The inverse image of this half open half closed interval 0 1 0 2, which is closed on 0 and open on 2, is equal to half open half closed interval minus 1 1. But this half open half closed interval minus 1 1 is not belongs to usual topology defined on x. That's why the function g defined from usual topology to lower limit topology is not a continuous function.